comments will be visible on this. Hello everyone, myself Nidhi and I welcome you all to Aakash Baiju's YouTube channel. Well, today we are going to conduct here yet another interesting session. We are going to discuss three-dimensional geometry. And as this is the theory session, we'll deal with different concepts which are involved in the chapter. So it's a bit of kind of revision for you guys if you have already gone through this chapter earlier. And if this chapter has to be covered at a later point, then also this session is very helpful. I'm going to explain you different concepts related here in three-dimensional geometry, and whenever you read it further, wherever you are studying right now, whenever you read it further, you can again refer to this session and clear some more concepts. Hi Abhiram, hello Sandesh, how are you guys? I'm good. How are you? Yeah, so please give me a thumbs up guys if you can see me clearly and hear me out. I'm waiting for your reply. Hi Max Education, hello. How are you guys? So yet another interesting session is for you, right? So I hope you are all excited. Yes, correct. Hi Himanshu. You should be excited, right? This is kind of, recap of what you have learned over here. And do keep pen and paper guys, or the notes, whichever you feel like keeping along with the session. You can write some important points, whichever points were missed out earlier, and obviously we'll solve some basic questions also, so you should be able to give me answer, before I even lift my pen. So that should be your speed. Hello Priyanka, hi Amit, Jai Hind, hello Poonam, how are you? So guys, shall we start the session? Vectors, yeah, it is are a very important. Every JEE Mains attempt, whichever you have seen in the past years or JEE Advanced, vectors and 3D is really very important. And from vectors as well as 3D questions come, right? So you can't leave this topic. You have to be very thorough in all the concepts which are coming, which will be coming in the chapter, both in vectors and 3D. And 3D specifically is very interesting. If you have read straight lines, which I hope you have and you do remember, so some of the part of straight lines also will be revised over here. That was in 2D, this is in 3D. So another relation will be there. We'll just add Z, that is my three-dimensional component, in many of the formulas. So it's quite similar to what we have read over here. Some part of it is obviously similar, and rest will also learn new things over here. So hi Shubham, so I guess you can hear me out clearly, right? Shall we start? Are you guys all excited? Please give me a thumbs up. Shall we start the session? Okay, all right. Now, सबसे पहले three-dimensional geometry में होता क्या है? तो coming on to the definition part, because it's a recap session, as I told you, a revision session. एकदम basic से will start, and you have to be with us, right? ताकि हम end तक लेके जाएंगे chapter को, and will cover all the different concepts जो बहुत important है for this chapter. So tune in guys and be over here only. All set, all excited, and your concentration should be 100%. Okay. So सबसे पहले three-dimensional geometry. Well, कोई भी point को जब हम 2D में define करते हैं, we generally denote it by x, y, right? The x component and y component. While in 3D, we'll be needing one more component, which is z. So किसी भी point को अगर हमें determine करना है, उसकी position determine करनी है, so we need three different components over here, which are x, y, and z. And this is all three-dimensional geometry you will rotate about. Alright? Okay, so this was the very beginning of the chapter. Now, सबसे पहली जो चीज आती है, that is point. So, what are the coordinates? What are the position vector of a point? तो अगर हम 3D में, that is my x, y, and z axis में, अगर हम plane को consider करें, three different planes are there, तो अगर कोई point हम consider करते हैं, let's say P is x, y, z, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका coordinate define करना है, so that means my x component, y component and z component, तो basically this is my origin, and यहाँ पर जो हमारी coordinate axis रहेंगी corresponding to x, y and z axis, ऐसा हमने एक cube बना लिया, and यहाँ पर
अगर हम पॉइंट्स बनाना चाहें तो ऑन एक्स एक्सिस हमारा जो पॉइंट होगा करस्पॉन्डिंग टू ए, इट विल हैव कोऑर्डिनेट्स x, 0, similarly we'll have b on y axis, c on z axis and some more points on xy plane, yz plane and zx plane. and यहाँ पर what you have to remember over here is कि ये जो हमारा पॉइंट a है, जो हमारा पॉइंट b है and जो हमारा पॉइंट c है, These are orthogonal projections, all right? तो कभी भी क्वेश्चन में orthogonal projection of point P on x, y and z axis लिखा हुआ है, that means they are talking about A point, B point and C point. And उनके coordinates respectively, since A is lying on x axis, it's x, 0, 0. You can write for B as well as for C. Hi Amrit, hi Krishna. So, yes, this was the very basic thing, all right? Orthogonal projection of a point on x, y and z axis. Yes, Arav, Cengage is a good book. You can attempt it, but before that, you should be clear with your concepts, all right? If you have practiced, if you have cleared your concepts, theory is perfect for you, then obviously you can go for Cengage, okay? All right, moving further. अब यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यार दो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 and another point is 2, 4, 7 and you have drawn planes which are parallel to coordinate planes, I mean the coordinate axis. तो xy plane के parallel, yz plane and zx plane के parallel हमने एक पूरा cuboid बना डाला. तो what is the length of edges of cuboid so formed? This is what we have to find out. So figure I'm telling you it will look somewhat like this. दो points रहेंगे, let's say P and Q and ऐसे दो हमने planes बना दिए, इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये क्यूबॉइड आ गया. अब फटाफट से बताओ कि यहाँ पर what will be the length of edges of cuboid? Solve it guys. जल्दी से बताओ क्या आएगा. हेलो दयानंद, हाय यू आर के राजकुमार. सो क्विकली गाइस सॉल्व दिस. बहुत ही सिंपल सवाल है. हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ निकालनी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ निकालनी है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ निकालनी है. ठीक है. सो पी से जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो पीसी डिस्टेंस आने वाला है, ऑलराइट. एंड पीसी जो है वो सिमिलर टू हमारा डीक्यू होगा. ठीक है. क्यूबॉइड मतलब जिस कमरे में आप बैठे हो ना उसी को क्यूबॉइड मान लो. एंड जस्ट एक पॉइंट पे पी रख दो, दूसरे पॉइंट पे क्यू रख दो और फिर फटाफट से डिस्टेंसेस निकाल लो अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. सो जल्दी से बताओ क्या आएगा. अगर हम पीसी निकालेंगे तो अपन को पता है कि यार 1 से मुझे 2 पर जाना है along the x coordinate, all right, along the x axis. तो इसका मतलब pc distance directly हो जाएगा 2, 1, 2 minus 1, that is 1, correct. स्वस्तिका. What about y? y में अगर हम निकालेंगे तो अगेन हमें यहाँ पर y एक्सिस के अलॉन्ग मतलब PE में जाना पड़ेगा. तो हम यहाँ 2 पर हैं और फिर हमें जंप करना है 4 पर. तो हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? दैट विल बी 4 minus 2, दैट इज 2, ऑलराइट. एंड सिमिलरली अलोंग z एक्सिस अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 3 से लेकर के वी हैव टू कवर टिल 7. सो z एक्सिस के अलोंग अगर हम p भी मूव करेंगे, सो हाउ मच डिस्टेंस आर वी कवरिंग, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? सो दैट विल बी 7 minus 3, दैट इज 4. सो लेंथ हमें सब एजेस की मिल गई है. सो फाइनल आंसर विल बिकम 1, 2 and 4. Alright, have you got it? Yes, Navyat, you are all correct. जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया थम्स अप. जो लोग नहीं कर पाए प्लीज फटाफट से ग्रूव इन हो जाओ यार. जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सवालों को एंड कुछ नया ऑब्वियसली सीखने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, ओके. सो आगे बढ़ते हैं. यस स्वास्तिका, इट्स करेक्ट. मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. Now, position vector of a point का मतलब क्या होता है? Position का मतलब, what do you mean by position? I mean, when you are defining it with respect to a point. So when you call or when you let's say speak about position vector of a point, it's generally related to origin. All right? Origin को हम 0, 0, 0 consider करते हैं और we might consider we might consider it as a zero vector. तो अगर हम उसके रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, लेट्स से पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x, y, z. सो ऐसा हमने एक बड़ा सा अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लिया. सो व्हेन वी टॉक अबाउट OP vector, because that will be the position vector, all right. तो OP vector, if you're writing it down, so we already know कि अगर मुझे OP vector लिखना है, so that will be basically summation of these two vectors. एक हमारा OL vector होगा, एक हमारा LP vector होगा. This is how we break, right? Vector law of addition में हमने सीखा है total displacement. So this is OL plus LP vector. ठीक है. Now OL and LP को हम further break down कर सकते हैं. तो हम कैसे उसको break down करेंगे? So यहाँ पर OL को हम basically we can write it as OA plus AL, isn't it? That is also a kind of displacement. OA will be along x axis, AL will be along z axis.
So you can further write it down as OA plus AL. Up now for the OA, I know already OA is my x axis के along वाला जो displacement है. AL is very similar to OC and this LP is very similar to OB. Vectors parallelly move कर सकते हैं directions में, हमें already पता है. Alright, so when I do that, it's going to become somewhat like OA plus OC and plus OB. मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया. नाउ OA जो है वो हमारा बेसिकली अलोंग z एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, सो इट विल बी अलोंग I कैप. सिमिलरली OB जो होगा विल बी अलोंग J कैप एंड OC जो होगा दैट विल बी अलोंग K कैप. गॉट इट? Now when I want to write it down, so I know the unit vector. I hope you are well aware. Unit vector I cap, J cap, K cap हो जाएंगे and A has coordinate x, 0, 0. So I can write my OA as xi cap. Similarly, OC जो बनेगा that will be my z k cap and OB will be my yj cap. Alright. So finally, अगर मेरा point P x, y, z है, so I can say its position vector directly will become xi cap plus yj cap plus z k cap. Hi Astha, hello Prashant, good evening. Hi Shoaib. So this is what was position vector. तो हमने coordinate देख लिया, position vector देख लिया. Very simple thing. I know that you all know this, but recap करना जरूरी है. All right. You never know कहाँ से question आ जाता है JEE Mains में. So that is really very important. So don't take this at all lightly. Please don't. All right. Moving further. Let's see और आगे क्या चीजें हैं. So next is distance formula between two points. बहुत ही similar है जैसे हमने straight lines में सीखा था in two dimensional plane. वैसा ही three dimensional में होगा. If we consider let's say 2 points over here having coordinates x1, y1, z1 and x2, y2, z2. The distance formula between 2 points P and Q will be nothing but root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. ठीक है, फटाफट से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं and we can find the distance formula. Now ये वैसे आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही सिंपल सवाल है, बट कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. लोकस वगैरह निकालने के सवाल इस पे बनते हैं. So एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है. अब यहाँ पर इस सवाल में हमसे पूछा है कि P point, you have to find locus of point P which is moving such that they have mentioned this condition. PA square minus PB square is 5. Now PA is the distance between points P and A. A point is given to us. Similarly, B point is also given to us. So PB denotes distance between points P and B. So this is the condition. You have to find locus of point P. Alright? You are के यार अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, ऐसा भी मत करो. बैठो आराम से, कुछ नया ही सीख कर जाओगे, मेरा वादा है आपसे. ठीक है? तो फटाफट से आंसर निकालो यार. जल्दी से बताओ क्या आएगा P पॉइंट का लोकस. हमें P पॉइंट का लोकस निकालना है और गिवन कंडीशन है हमारे पास में. अब इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे. ठीक है. नाउ PA अभी जस्ट हमने सीखा था इस डिस्टेंस फॉर्मूले से दैट वी कैन राइट इफ सपोज आई टेक P पॉइंट एज x, y, z, तो हम PA स्क्वायर को लिख सकते हैं x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square plus z minus 5 whole square. And similarly PB भी लिखा जा सकता है. So PB square will become x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square plus z plus 7 whole square. Alright? So PA square, PB square both are with us. So we'll just substitute in this relation. Alright? और फिर उसको फटाफट से simplify करेंगे. So जल्दी से simplify करके बताओ which of the options is going to come. A, B, C and D. You have 4 options. Guys, solve it fast यार. जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ. मैं भी सॉल्व कर रही हूँ बट मेरे से पहले निकाल लो तो बढ़िया ही है. सो PA स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर 5 में वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी. अब इसको ऑब्वियसली हमें सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो तरीका होता है कि यू कैन एक्सपैंड दिस आउट एंड इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन कैंसिल द टर्म्स. अदरवाइज छोटा तरीका क्या होगा, x की टर्म्स को कलेक्ट करके वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर y, सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर z. ऑलराइट? So when you apply a square minus b square formula over here, you know the factors a plus b into a minus b. So in these two terms it's going to become a plus b, that is 2x minus 2 multiplied by a minus b, that is minus 4. Similarly for these two it's going to become a plus b, that is 2y minus 7 multiplied by a minus b, which is minus 1. And for the last one, again when I apply the formula for a square minus b square, it's going to become a plus b, that is 2z plus 2 multiplied by, I would have the next term as a minus b, which is minus 12.
and this is equal to 5. All right, now when you simplify it further, ये हमारा finally ऐसा बन जाएगा minus 8x plus 8 minus 2y plus 7 and minus 24z minus 24 is equal to 5. और इसको further when you will bring terms to one side and combine the constants, final equation will look somewhat like this. 8x plus 2y plus 24z plus 14 is equal to 0. And definitely when we'll see the options, answer will become option B. Samjha? Very simple question. Yes? Alright. Moving further. और आगे हमारे पास में है distance of point from coordinate axis. Now distance between two points we have read. Distance of point from xy plane हम निकाल सकते हैं, from zy plane and maybe from zx plane. Now अगर coordinate axis से निकालना है, so suppose let's consider a point P having coordinates x, y, z and total हमने एक cuboid types consider कर दिया. So coordinate axis से निकालने का मतलब x axis से distance PA हमें निकालना है. Alright. Now PA distance मतलब क्या होगा? A we already know is orthogonal projection, so A coordinates will become x, 0, 0. So if you want to find this PA distance of P from x axis, तो directly distance formula we can apply, right? So x, y, z and x, 0, 0 के बीच का जो distance है, that is going to become root over y square plus z square. ठीक है, x component total गायब हो जाएगा, डायरेक्टली रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर यूज होता है सवाल में. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे y एक्सिस से निकालना होगा, सो दैट विल बी pb and again when I apply the distance formula it will be root over x square plus z square. Clear? And अगर मुझे z एक्सिस से निकालना है, which is my pc, so it's going to become root over x square plus y square. Clear? So these are the distances from all the three coordinate axes. इनके squares का summation they can give you, या फिर directly इसी पे based कोई और सवाल भी they can ask. ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए कि coordinate axis से कैसे distance निकलेगा and दो points के बीच में कैसे distance निकाल सकते हैं. ठीक है, now इसके बाद में और एक और जो काफी बेसिक है, जो हमने काफी दफे पढ़ी भी है, दैट इज सेक्शन फार्मूला. वो 3D में भी अप्लाई होता है, वेक्टर्स में भी अप्लाई होता है, स्ट्रेट लाइंस में ऑलरेडी वी हैव लर्न. सो सेक्शन फार्मूला में सपोज अगर मेरे पास में दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से P एंड Q ओवर हियर एंड कोऑर्डिनेट्स आल्सो आर गिवन. M इज अ पॉइंट जो उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो, लेट्स से M रेशियो N में डिवाइड करता है. दिस डिवीजन कैन बी इंटरनल, दिस डिवीजन कैन बी एक्सटर्नल. ठीक है, तो अगर इंटरनल होगा तो यू ऑलरेडी नो यू हैव टू पुट प्लस इन बिटवीन, एक्सटर्नल में यू हैव टू पुट माइनस. तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा दैट m कोऑर्डिनेट्स विल बिकम mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, the y1 is going to become my2 plus ny1 divided by m plus n, and the z1 is mz2 plus nz1 divided by m plus n. और ये इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी पता है यार आप सबको. ठीक है, तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला. इंटरनल में प्लस लगा देना, एक्सटर्नल में माइनस. क्लियर है? नाउ सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके वी हैव आल्सो फॉर्मूलाज फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड एंड इनसेंटर. भाई उन दोनों के तो निकाले जा सकते हैं, राइट? तो सेंट्रॉइड का अगर अपन को सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज अगर किसी ट्रायंगल में वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन है. सेंट्रॉइड वी ऑलरेडी नो इट्स इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, राइट? और मीडियन को वो 2:1 में डिवाइड भी करेगा. तो अगर G यहाँ पर अपना सेंट्रॉइड है, यू नो दैट G का जो कोऑर्डिनेट होगा अपन ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इट विल बी x1 plus x2 plus x3 by 3. Similarly, y coordinate is y1 plus y2 plus y3 by 3 and z और यहाँ पे आ जाएगा because हम 3D में जा रहे हैं, so it will be z1 plus z2 plus z3 by 3. That's it. This is the formula for centroid का coordinate. Got it? Now centroid के अलावा similarly in center के भी coordinates निकाले जा सकते हैं. वही same formula है guys जो straight line में आपने पढ़ा था, सिर्फ z part को add करना है और कुछ भी नया नहीं है अभी तक. ठीक है, तो in center you already know क्या होता है. It is intersection of angle bisectors, right? और angle bisectors का intersection obviously अपन को ये भी पता है कि जब भी हम angle bisector बनाते हैं तो वो opposite sides को in the ratio of sides containing the angle divide करता है. अगर ये point अपना D होगा तो BC को it's going to divide in the ratio C ratio B. यहाँ से basically formula निकाला गया था. ठीक है, so this will be the incenter I and coordinates will be, अगर हमारी sides यहाँ पर A, B and C हैं,
So the coordinate of Incentre will become ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c. And similarly, you can write the y and z coordinate. Got it? Alright. So guys, pay attention over here. आपस में बातें नहीं करनी है. ठीक है, यहाँ ध्यान देना है. अभी बहुत important concepts भी आने बाकी हैं. So don't do that. Pay your attention over here. Now, यहाँ पर let's use that concept which we have just learned. यहाँ पर A, B and C are given as vertices of triangle. You have to find out the vector which is representing internal bisector of angle A. So basically figure will look somewhat like this. I have A, B and C with me. And यहाँ पर हमें internal bisector का के along vector निकालना है. So फटाफट से tell me guys what will be the right option. जल्दी से solve करो और बताओ क्या आएगा इसका correct option. Internal bisector के along you have to find the vector. So basically that can be only be found when we'll find this point D. अगर AD is the internal bisector and suppose we find coordinate for point D, we can get that bisector. We can get that vector along the bisector. ठीक है, तो इतना ही काम है आपका. जल्दी से D निकालो and फटाफट से do tell me what you are getting, which option will be correct. Okay, so Jitendra said it's B. And what about the rest of you guys? Solve it very quickly guys. जल्दी से निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा. सिंपल सवाल है. I've already told you D हमें निकालना है. एक बार ED आ जाएगा, we can get the vector ED. That is what is to be done. Now यहाँ पर D निकालने के दो तरीके हो सकते हैं. एक तो जो अभी मैंने बताया, that internal bisector divides in the ratio of sides containing the angle. ठीक है, वो यूज कर सकते हैं. Otherwise you can also find the Incentre, and once you get the Incentre, AI vector obviously AD के ही along रहने वाला है कि नहीं. तो दो तरीके हैं. You can guess or you can find, basically not guess, you can find I coordinate or you can get D coordinate. तो मैं D coordinate निकालने की कोशिश कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर sides निकाली. ठीक है, so I am finding AB and AC. Let's see क्या आता है. Distance formula लगाएंगे. This is 1, 1, 2. This is 4, 3, 1. So this is going to become root over 3 square plus 2 square plus 1 square. That is root 14. And similarly AC अगर हम निकालेंगे, so it is again root over 1. Square is 1 plus 2 square plus 3 square. ओहो, ये तो दोनों बराबर आ गए बॉस. Both are equal to root 14. That means this is an isosceles triangle. और अगर this is an isosceles triangle, we already know that concept that AD अगर यहाँ पर angle bisector है, so it has to be the median also, right? So ये वाला concept हम यहाँ use करेंगे. AD will be median as well as angle bisector, and therefore it will divide BC in 1:1. और अगर ये BC को 1:1 में divide करता है, that means our purpose is solved, right? हम directly midpoint यहाँ पर निकाल सकते हैं. एक बारी midpoint आ जाएगा इन दोनों का, B का and C का. So you know the midpoint formula, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2. So that is going to become 3, 3, 3. ठीक है, now I have D point, I have A point. So I can say that जो भी मेरा vector AD होगा, that has to be along 3 minus 1 I cap plus 3 minus 1 j cap plus 3 minus 2 k cap. So it's going to become 2I cap plus 2j cap plus k cap. Abhishek, very good, you got the right answer which is D. Lalit and Jitendra, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यार, ध्यान रखो. While solving the questions, don't make silly mistakes. Please avoid doing that. So this will be the AD vector. Alright, got it? Okay, moving further. Next is area of triangle. Now area of triangle के लिए vectors you already know. If suppose A, B and C are given, we generally find AB vector, AC vector, and the formula goes as half of magnitude of AB cross AC. And this can be expressed in 3D also, because AB will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Alright? And similarly, I can write AC vector also. So when I take cross, there is this determinant which is going to come. So it will be half determinant of I cap, j cap, k cap, and this is my AB vector, this is my AC vector written. Got it? पूरा modulus ले लेंगे to make that value positive. So this will be area of triangle. जहाँ भी vertices दिए होंगे, either you can go by this formula or you can apply half AB cross AC. I mean that's one and the same thing. ठीक है? All right. Moving on, next thing is volume of tetrahedron. Now volume of tetrahedron हमने vectors में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो वही formula we are going to apply over here and we'll convert that into 3D. तो suppose अपने पास में ये tetrahedron है with vertices given to us as A, B, C and D. तो vectors में we have already learned that we'll find
कोटर्मिनस एजेस के अलोंग 3 वेक्टर्स. कोटर्मिनस एजेस मतलब जो एक ही पॉइंट से शुरू हो या खत्म हो. सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द रिक्वायर्ड वेक्टर्स. ऑलराइट. और अगर ये रिक्वायर्ड वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, इट्स 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी and you will take its magnitude, the positive value. Now box ABC को vectors में हम निकाल सकते हैं. 3D में हम कैसे convert करेंगे? तो box ABC determinant form में होता है, याद है ना? It is in determinant form. तो अगर वो determinant form में है तो A vector जो होगा that will be x2 minus x1 I cap. Similarly it will be y2 minus y1 j cap, k cap and j cap and z2 minus z1 k cap. Similarly b वेक्टर लिख सकते हैं, similarly c वेक्टर लिख सकते हैं और फिर हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है. So it's going to become somewhat like 1/6. This determinant is going to come and again a modulus. ठीक है. तो वॉल्यूम निकालने के लिए टेट्राहेड्रन की you can go by 3D, you can convert it into vectors and find box ABC. Both methods will give you the same answer. Alright. तो फटाफट से अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर. ठीक है. नाउ सवाल ये है, you can already read the question, you have to find volume of tetrahedron. All the 4 vertices are given to you. तो जल्दी से शुरू हो जाओ. फॉर्मूला ऑलरेडी मैं एक बार और बता देती हूँ. दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज. 1/6 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंटायर थिंग. किसी भी एक पॉइंट को यू कैन टेक एज योर इनिशिएटिंग पॉइंट x1, y1, z1 एंड उसके रेस्पेक्ट में 3 पॉइंट्स को यू कैन कंसिडर. पुट इट ओवर हियर एंड गेट मी द राइट आंसर गाइज. सॉल्व करो फटाफट से और बताओ कि क्या आंसर आएगा. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वी हैव टू फाइंड आउट. 4 vertices are given to us. Alright, so solve it fast, solve it quickly and tell me what you are getting. You have to just substitute x2, x1, y2, y1, z2, z1 and so on in all the 3 rows and solve the determinant. Normal expansion है. अगर हम यहाँ पर P से शुरू करते हैं, let's say I take P as my initiating point. So when I subtract these two, it's going to become -1, -2, -1. Similarly, अगर इनको subtract करेंगे, so it's going to become 1, -5 and -1. And for the last one, it's going to become 5, -2, -2. So ऐसा कुछ हमारा determinant बनेगा. And now is just expansion of this. All right. तो अगर अपन इसको expand करेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 times of. This is going to become 10. Then I have one more 10. Then it is +2. Minus I'll have 25. Then I would have again +2 over here and here I would have +4. Got it? तो ये अपना cancel out हो जाएगा and you'll have a -1 left out. So it will be 3/6 basically, or 1/2 unit cube will be the volume of this tetrahedron. आया ये सबका? Have you got this answer? 1/2 will be the volume of this tetrahedron given the 4 vertices P, Q, R and S. And I'm not getting the comments guys. Please do comment and tell me whether you are getting it or not. Answer आया या नहीं आया? Have you got the answer? It's 1/2. Yes, Jyoti, it's half. That's correct. What about rest of you guys? यार comment करो फटाफट फटाफट. साथ में solve करेंगे तो ही interesting बनेगी चीज, right? You don't just have to sit and see. साथ में solve भी करो. Keep on writing down. कुछ important point अगर miss हो जाता है तो वो भी लिखो. And जल्दी करो भाई. You have to solve it. Yes, Jyoti, you are right. It's half. What about rest of you guys? Have you got the answer? Well, if not, please look over here and कोई calculation mistake हो गया हो तो जल्दी से correct कर लो. Okay, so Abhishek and Saib, they have got the answer. All right, moving further. अगली चीज क्या आएगी यहाँ पर? तो अगली चीज आएगी direction cosines of a line. अब यहाँ से 3D मेन चीज जो है वो स्टार्ट होती है. लाइन एंड प्लेन 2 ही चीज है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में विच आर मोर इंपॉर्टेंट आई वुड से. एंड अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस भी बेसिकली डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करती है. ऑलराइट, व्हेनेवर यू आर इन वेक्टर्स यू नो दैट फॉर अ लाइन यू हैव अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, पैरेलल वेक्टर टू इट. 3D में इट बिकम्स डायरेक्शन कोसाइन. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? सो आई will tell you the definition over here. If suppose you have a directed line segment or directed line which makes some angles alpha, beta, gamma with x, y and z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma, they are known as direction cosines of this line. DCs हम उनको बोलते हैं. तो यहाँ पर let's say P is having coordinates a, B, C and it's making angles like alpha, beta, gamma
with x, y and z axis. ठीक है. Now cos alpha अगर मुझे निकालना है तो I already know that this OP distance is r. And अगर मैंने यहाँ से perpendicular drop किया, I know that this point will be a comma 0. So therefore this distance has to be a. तो अगर इस right angle triangle में if I want to get cos alpha, I know it's based upon hypotenuse, so it will be a by r. ठीक है. तो हमारा जो cos alpha की वैल्यू होगा that will be a by r. cos alpha को हम L से डिनोट करेंगे. So L will be a by r and r is just distance between origin and point P. So that is going to become a by root over a square plus b square plus c square. ठीक है. Similarly अगर मुझे m निकालना है तो again I am going to consider this. ये वाला जो distance है ये मेरा b हो जाएगा. So cos beta which is my m is going to be again b by r or b by root over a square plus b square plus c square. And similarly n जो अपना z axis के साथ में angle represent करेगा gamma. So n which is my cos gamma will be c by root over a square plus b square plus c square. ठीक है. तो एक तो डायरेक्शन कोसाइंस अपन को समझ में आने चाहिए. डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करेंगे बट दैट इन 3-dimensional ज्योमेट्री नॉट इन वेक्टर्स. गॉट इट. एंड हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ये जो अल्फा बीटा गामा का समेशन है इट्स नॉट इक्वल टू 2 पाई. ठीक है. वो कंफ्यूजन नहीं रखना है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं होगा. 3D में दे आर मेकिंग डिफरेंट एंगल्स. ठीक है. ओके ऑलराइट. नाउ अब यहाँ पर एल एम एन तो हमने लिख लिए. इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सा रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस में which you have to remember and that is the value of L square plus M square plus N square. So if we square this and add, obviously you know the LCM will be same. It's a square plus b square plus c square. So when you add the entire thing, finally the value becomes equal to 1. So this is one more thing which you have to remember that L square plus M square plus N square की value is always 1. काफी बारी it will be used in questions. They'll give you LM, you have to find N or you have to find the angle. So you can use this relation always. Clear? तो ये दो चीजें यहाँ याद रखनी है. एक तो cos alpha, cos beta, cos gamma का क्या मतलब हुआ, how to find that out and this relation. Got it? Alright, अब फटाफट से एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर. We have to find direction cosines of a line which is equally inclined with the coordinate axis. Equally inclined का मतलब होता है it's making equal angles with x axis, y axis, z axis. So that means I can say that alpha, beta, gamma all three will be equal. And if alpha, beta, gamma are equal, I can also say that since my L, M, N are cos alpha, cos beta and cos gamma, all three are equal. अब how to find element, guys? बताओ क्या आंसर आएगा? Which option do you find? Will you take as the right one? A, B, C or D? It's a very basic question. They can ask in different formats. A line which is equally inclined with the coordinate axis and कुछ और भी उसमें पूछ सकते हैं. So you should know what will be the directed line segment. I mean in which direction it will be. So element you have to find out. And उसके लिए एक ही relation है हमारे पास में that L square plus M square plus N square value is going to be 1. ठीक है. तो अगर हम एलिमेंट को इक्वेट करें और यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, so I am going to get from here 3L square is 1 and so therefore L value will come out as plus minus 1 by root 3. You can take plus, you can take minus, both will be correct. तो यहाँ हम प्लस लेंगे क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पर भी तीनों में माइनस नहीं है. ठीक है. So the possible value will be L, M, N all three are equal to 1 by root 3. That's correct. काफी लोगों का आ भी गया है आंसर. Very well. And so therefore direction cosines will become 1 by root 3 comma 1 by root 3 comma 1 by root 3. You can also have its negative part, but since that is not given over here, we'll take B as the right answer. ठीक है. तो कभी भी equally inclined whenever they are saying, you have to remember element all three will be equal. Got it? All right. Now direction cosines के बाद में एक और जो बहुत important चीज है which is direction ratio. Now direction ratio और direction cosine में क्या difference होता है? Basically direction cosines we have already seen, it is cosine of angle. यहाँ पर direction ratio is generally proportional to that direction cosine. So if I take let's say ABC and it is proportional to my direction cosine element, so I would say that ABC becomes my direction ratios. क्या मतलब हुआ इसका? ठहर जाओ, example में बताती हूँ. Suppose if you take your direction cosine for a line something like this, 2 by 3 minus 2 by 3 and 1 by 3. Now I have to write its direction ratio, so I can multiply it by any proportionality constant. You can keep it like this. You can multiply it by
3 and you can write it as 2, -2 or 1. You can also multiply this further by let's say -3 and you can write it as -6, -6, -3. आप इसको किसी और फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय हाफ एंड देन यू कैन राइट, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय √7 एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2√7, -2√7, √7. So basically direction cosines क्या है? They are just proportional to, sorry, direction ratios are just proportional to direction cosines. तो एक बार direction cosines आ गए, direction ratios हम लिख सकते हैं. कोई भी proportionality constant से you can multiply and write it down. अब जरूरत क्या होती है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन की, तो वो भी बताते हैं. अगर सपोज किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, एंड सपोज हमारा ऐसा कुछ डायरेक्टेड सेगमेंट है, ठीक है, OP की हम यहाँ बात कर रहे हैं. दिस इज माई लाइन सेगमेंट और लाइन, और P के कोऑर्डिनेट्स A, B, C हैं. तो व्हाट वी हैव लर्न्ड, अभी हमने सीखा था कि LMN जो होते हैं दैट इज A डिवाइडेड बाय R. So it's A by root over A square plus B square plus C square, comma B by R, comma C by R. या तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स OP लिख सकते हैं और टुवर्ड्स PO लिख सकते हैं. I mean the direction could be going from O to P or from P to O. So either you mention with plus or you mention with minus. Both are correct. अगर कभी डायरेक्शन कोसाइंस 1 या डायरेक्शन रेशियोज लेट्स से 1, -1, -1 है, so direction ratio can also be -1, -1, -1. Both will be right. ठीक है, लाइन के along किस डायरेक्शन में जा रहे हैं doesn't matter, either in going up direction or going down direction. Alright, okay. Now अब यहाँ पर ये हमारे LMN हो गए. तो अगर यहाँ से if I want to find A value, so it can be written as LR from here directly, because this root over A square plus B square plus C square is nothing but it is R, है ना. So what is the relation between direction ratio and direction cosine? That if your direction cosine is L, the distance you know between the points is R, so your direction ratio is nothing but LR. Similarly, B you can write as MR and C you can write as NR. Alright, R is the distance between any two points which you are talking about. Clear? Now यहाँ पर एक और बहुत important चीज है. वेक्टर्स यू ऑलरेडी नो, हमने पढ़ा हुआ है भाई, कोई भी लाइन है उसके अलॉन्ग एक पैरेलल वेक्टर होता है. तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता है दैट इट इज ABC, सो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर्स एंड राइट डाउन कि भाई जो पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है, इफ डायरेक्शन रेशियो इज A, B and C, द पैरेलल वेक्टर विल बी AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप. दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली वेक्टर्स में जाते ही व्हाट इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट parallel vector along the line. So if direction ratio is representing the parallel vector, LMN क्या represent करेंगे? Direction cosines. What are they going to represent? So direction cosines are going to represent parallel unit vector. ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है. Vectors and 3D में this is the relation. So whenever you are talking about कोई particular line के parallel vector you are writing down, and if you want to convert it into 3D, so that parallel vector will become the direction ratio, and similarly unit vector will become the direction cosine. Clear है? Alright. Now अगर suppose I have 2 points over here, let me go through this concept also, and it has coordinates let's say x1, y1, z1. And similarly B point के coordinates हैं x2, y2, z2. So if coordinates are given, then also you can write the vector along it. पता है ना वेक्टर, अगर मुझे AB वेक्टर लिखना है तो it is x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Similarly 3D में dr, that is my direction ratio, वो भी लिख सकते हैं. And what that direction ratio is going to be? Well, that will be x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. So whenever 2 points are given, you can write the direction ratio. And अगर direction cosine लिखना है तो you just divide this by distance of between the points AB. So x2 minus x1 upon r कर देंगे, y2 minus y1 upon r, z2 minus z1 upon r. That will become the direction cosine. ठीक है, सो नेवर फॉरगेट डायरेक्शन रेशियो मतलब पैरेलल वेक्टर होता है, डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट्स पैरेलल यूनिट वेक्टर. ठीक है, हेलो रंजन, हिमांशु,
What are you not understanding? बोलो भाई क्या नहीं समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ही किया है अभी तक, और अब उस पर फटाफट से एक सवाल करते हैं. सो हिमांशु, नाउ यू हैव टू गिव मी द आंसर. ऑलराइट, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है गाइस. फटाफट से डू टेल मी व्हाट द आंसर विल बी. हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो बेसिकली कोई क्यूब हमने मान लिया जिसका साइड लेंथ a है. लेट अस से ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है, और ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. दिस इज माय पॉइंट P व्हिच इज हैविंग कोऑर्डिनेट a, नाउ किसी भी एक डायगोनल का इफ आई हैव टू टेल इट्स डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, इट विल बी अलोंग OP. ऑलराइट, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर OP के अलोंग जो वेक्टर होगा दैट विल बी AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप. सो आई कैन से दैट जो DR होगा पैरेलल वेक्टर दैट विल बी डायरेक्टली 1 1 1 ना भाई, A से डिवाइड करके लिख सकते हैं. सो इट विल बी 1 1 1. And if direction ratio is with me, obviously I'll divide it by its magnitude, which is root over 1 square plus 1 square plus 1 square, that is root 3. So it's going to be 1 by root 3 comma 1 by root 3 comma 1 by root 3, or the negative part of it. Okay? So these two are correct answers for direction cosines. Jeetu, if you are having a problem, please do sign it again. Problem chali jayegi, I guess. Rest of you, I guess you are hearing me properly, right? Give a thumbs up, guys, if you don't have any problem. You can see me clearly and you can hear me out properly. Alright, so this will be the direction cosine and direction ratio part. Now is the angle between two lines. So if two lines, let's say R L1 and L2, and parallel vectors are given to us, or let's say the direction ratios are given to us. So we have already learned कि वेक्टर्स में फॉर्मूला होता था a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b. सो दैट वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट ओवर हियर. अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास अवेलेबल हैं, सो यू नो दैट a डॉट b में जब हम इन दोनों का डॉट लेंगे, सो माय थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स व्हिच विल बी रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड द अनदर टर्म. ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज अगर गिवन है, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड वेदर द लाइंस विल बी पैरेलल और परपेंडिकुलर. तो अगर लाइंस पैरेलल हैं, सो यू ऑलरेडी नो कि भाई सेम ही वेक्टर के अलोंग रहेंगे, सो दिस रेशियो हैज टू बी इक्वल, है ना. और अगर परपेंडिकुलर है, दैट मींस द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा. सो कंडीशन विल बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0. कूल. तो ये दोनों कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं फॉर वेदर द लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर. कंडीशन दे रखी है तो वी कैन मेक इट्स यूज. निकालना है तो इस कंडीशन को वी कैन चेक. ओके, अब एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से. वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू बॉडी डायगोनल्स ऑफ एनी क्यूब. नाउ कोई भी दो बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब लेना है तो सिंपल क्वेश्चन को रखने के लिए वी कैन टेक इट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो अभी हम कंसिडर कर रहे थे. एक वर्टेक्स विल टेक एट ओरिजिन. ठीक है, तो सपोज ऐसा कुछ अपना फिगर है, अपन ने यहाँ पर साइड्स नहीं दी हुई हैं, तो ए के अलोंग यू कैन टेक एज ए. सो इन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए. तो एक बॉडी डायगोनल ओपी, अभी हमने पहले उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाला था. इट केम आउट एज लेट्स से 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3. एंड एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट अस से हमने यहाँ पर BL ले लिया. आप कोई भी दो ले सकते हो. नाउ BL अगर आप लोगे तो BL जिस वेक्टर के अलोंग होगा उसका डायरेक्शन रेशियो या उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं a कॉमा माइनस a कॉमा a. और यू कैन ऑल्सो से कि डायरेक्शन रेशियो 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 हो जाएगा a से डिवाइड करते ही. Now, if I want to write its direction cosine, I'll again divide by its magnitude, which is root 3. So another one will be 1 by root 3 comma minus 1 by root 3 comma 1 by root 3. Now these are my direction cosines. And formula क्या होगा direction cosines के लिए? We already know that L square plus M square plus N square तो 1 हो जाएगा. ठीक है, तो cos inverse directly ये बन जाएगा. Theta is cos inverse L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. The denominator part definitely will become 1 for both OP as well as BL. ठीक है, अब जल्दी से इसमें substitute करो guys and tell me what you are getting the answer as. थीटा की क्या वैल्यू आएगी? डायरेक्शन कोसाइंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओपी का विल बी 1 by root 3 comma 1 by root 3 comma 1 by root 3. अभी जस्ट हमने निकाला था. एंड BL का कैसे निकालेंगे? दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू. So BL का if DC you have to find out, it will be somewhat like this. And now you'll just substitute over here
और यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गाइस बताओ विच ऑप्शन आर यू गोइंग टू बी, आई मीन विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा आंसर आ रहा है? इज इट ए, बी, सी और डी? डू राइट इट फास्ट, जल्दी से लिख के बताओ क्या आंसर निकल के आता है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ L1, L2, M1, M2, N1, N2. Okay, so Jyoti has already answered, it's B. No Jyoti, that's not correct. Do check your calculations. Navyat said it's C. Well, that is right. Bang on. तो यहाँ पर जब हम value substitute करेंगे, so theta is cos inverse. We'll just substitute the values. So that will be 1 by 3 when you multiply these two. Then when you multiply these two, it's minus 1 by 3 and then again it's 1 by 3. Alright? और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा cos inverse 1 by 3. ठीक है? This will be the correct answer. So you understood how to find DCs, you understood how to find DRs. Angle DR के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, DC के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, यहाँ तक हमने सब सीख लिया है या दोबारा से रिवाइज कर लिया है. Alright? Okay. अब आगे क्या और नई चीज आने वाली है? So now comes a straight line. अब straight line लिखते कैसे हैं? तो what we have learned is कि भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होता है उस पर एक पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर. ठीक है, यहां पर ऑब्वियसली वही सेम कॉन्सेप्ट 3D में अप्लाई करेंगे, बट पैरेलल वेक्टर की जगह आएगा dr, दैट इज अ डायरेक्शन रेशियो. तो अगर यहां पर सपोज आई कंसिडर अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड हैविंग dr एज a, b, c, सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट इट आउट? तो पैरेलल वेक्टर इज ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप. हमने एक पॉइंट उस पर कंसिडर करा, लेट्स से P is the variable point having coordinates x, y, z. So this AP vector is parallel to this given vector. और अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो you already know what the condition you have to apply. I cap का कोएफिशिएंट का रेशियो is J cap का कोएफिशिएंट का रेशियो is K cap का कोएफिशिएंट का रेशियो. That means it's going to look somewhat like this. x minus x1 ये इसका dr बनेगा upon A is equal to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C. And इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? This is known as symmetric form of a line. हम generally most of the cases में यही वाली फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पर do not forget ABC direction ratios of line है, that means the parallel vector and x1 y1 z1 is a point which is lying on the line. अब इसी पर अगर सपोज मुझे P लिखना है, ठीक है, I want to write P, a general point, क्योंकि इस लाइन पर infinite points रहेंगे. So general point लिखने के लिए what do we do? We'll equate this to some ratio or some constant, let's say lambda. इस ratio को मैंने lambda के equate करा. So from here I'm going to get x value as x1 plus a lambda. Similarly y का value यहाँ से आएगा y1 plus b lambda and z का value will become z1 plus c lambda. So this is again another important thing. किसी भी लाइन पे if you want to write a general point you can always write it like this. Got it? Now अब लाइन में if suppose the parallel vector or let's say direction ratio is not given, so what else can be given? तो भाई अगर एक point और direction ratio नहीं देके suppose they give you two different points on this line, तो भी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं. बट वो लिखने से पहले एक बार इसको वेक्टर फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं. दिस वाज द सिमेट्रिक फॉर्म व्हिच वी जस्ट सॉ. वेक्टर फॉर्म में यू ऑलरेडी नो इट इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b सॉर्ट ऑफ थिंग. हियर a इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन द लाइन एंड b बिकम्स द पैरेलल वेक्टर. याद है ना? तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा? इट्स गोइंग टू बिकम r वेक्टर इज इक्वल टू दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स द पैरेलल वेक्टर. ठीक है, सो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल. कभी सपोज इफ यू फाइंड आउट कि यार कार्टेशियन में सॉल्व करने में यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, क्विकली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म एंड सॉल्व, और मे बी वाइस वर्सा. ओके, ऑलराइट. सो अभी एक सवाल लेते हैं, उसके बाद में आई विल टेल यू कि अगर दो पॉइंट्स दे रखे होंगे तो हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. So the question is in front of you. You have to find a line which is passing through a point and is parallel to another line. Now if two lines are parallel, we already know that they will be along the same vector. That means उनके DRs will be same. ठीक है, तो अगर DR same है that means इस line का DR अगर मुझे लिखना है, so it's going to be Z plus 7 upon minus 5. ये चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ ऊपर में माइनस है and z minus z1 होता था, so I have written it like this, z plus 7 upon minus 5. ये गलती मत करना. So direction ratio basically बनेगा 1, 4 and minus 5
for this line. ठीक है, don't write it as 1, 4 and 5. जल्दी जल्दी में वो mistakes हम करते हैं. So this will be the dr. Now हमें dr पता है, हमें point पता है, so we can write the equation of line in the general form x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. So this will be the equation of line. ठीक है, हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट सेशन ऑब्वियसली विल बी बेस्ड अपॉन मोर गुड क्वेश्चंस. अभी वी हैव टू जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट गाइस. ऑलराइट, सो बी विद मी. सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन है एंड विल सी सम क्वेश्चंस जो डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट पे पूछ सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. मूविंग फर्दर, इस स्ट्रेट लाइन में जो सेकंड पॉइंट व्हिच आई वाज टेलिंग यू, सपोज इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी. तो अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं पर हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए, साथ में भी ऑल्सो नीड डायरेक्शन रेशियो. एंड हाउ कैन आई फाइंड डायरेक्शन रेशियो गाइस इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन दिस लाइन. वेल वी हैव ऑलरेडी सीन दैट x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, राइट. वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो. तो वो हम यहाँ abc की जगह पुट करेंगे. सो इक्वेशन देयरफॉर इज गोइंग टू बिकम x minus x1 by x2 minus x1. Similarly, y minus y1 by y2 minus y1 is equal to z minus z1 by z2 minus z1. ठीक है? So this you are going to use when 2 points are given. So always remember to write equation of line we need 2 things, a point and dr. अब आगे बढ़ते हैं इस पे और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं. तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन भी काफी दफे दे कैन आस्क यू. वेक्टर में भी पूछ सकते हैं उसको. यू कैन कन्वर्ट इनटू योर कार्टेशियन फॉर्म आल्सो. सो सपोज यू हैव दीज 2 लाइंस एंड यहाँ पर बाइसेक्टर्स पूछे हैं. सो फर्स्ट लाइन इज अलोंग बी वेक्टर, सेकंड लाइन इज अलोंग सी वेक्टर. सो व्हेन यू राइट बाइसेक्टर्स, आई होप यू डू रिमेंबर वेक्टर्स में हम बी कैप प्लस सी कैप का यूज करेंगे. इट्स नॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. सो वन विल बी अलोंग बी कैप प्लस सी कैप, अनदर विल बी अलोंग बी कैप माइनस सी कैप. ऑलराइट, बी कैप एंड सी कैप पैरेलल यूनिट वेक्टर्स होते हैं लाइन के, नॉट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, एंड यहां पर एक और चीज मैं फटाफट बताती हूं. इफ यू वांट टू फाइंड अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा आउट ऑफ दीज 2, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ऑलवेज take this dot b dot c and check whether it is coming positive or not. If this is positive, definitely b cap plus c cap ही हमारा acute बनेगा. And अगर ये negative हुआ, so b cap minus c cap will be the acute one. Alright, तो कभी कभी if they ask you acute and obtuse, you have to always check b dot c. ठीक है? Alright. अब इसी को अगर हमें 3D में लिखना हो तो these are the 2 equations. यहाँ पर मैं डायरेक्शन कोसाइंस लिखूंगी because b cap और c cap लिखना था which was parallel unit vector. So here I am writing DCs. So direction cosines, if I want to write L1 M1 N1 and L2 M2 N2, so my b cap plus c cap basically is going to become L1 plus L2. Similarly, the next one will be M1 plus M2 and the third one will be N1 plus N2. दोनों को हम ऐड कर रहे हैं. And similarly we can subtract also. So again the bisector will pass through this particular point A, which is intersection of 2 lines, and the equations will look somewhat like this. एक में L1 plus M2 L1 plus N2 L2 M1 plus M2 and N1 plus N2. दूसरे में you have to put a minus sign. Alright? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जल्दी से. You have to tell me what is the answer for this question. You have to find equation of angle bisector of angle between 2 lines. अब यहाँ पर DRs दिए हुए हैं. ठीक है, DRs are given. Don't forget, DC नहीं दिए हुए हैं, DRs दिए हुए हैं. So you have to find DC and then you have to tell me which of the answer will be correct. So जल्दी से निकालो फटाफट से क्या ऑप्शन सही आएगा out of all these 4. You can apply the formula. I can write it for you. L1 plus L2, M1 plus M2, N1 plus M2. या तो प्लस में या माइनस में, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं. And you can obviously check which option is going to be correct. So first of all DRs दिए हुए हैं तो हम यहाँ से DC निकालेंगे. तो DC के लिए 1 1 1 के corresponding अगर मुझे लिखना है तो you have to just divide by its magnitude which is √3. So it's 1 by √3, 1 by √3, 1 by √3. And similarly इसके corresponding it will be 1 by √3, comma again I would have 1 by √3 and then minus 1 by √3. Got it? अब अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सपोज इफ आई वांट टू ऐड दीज 2, सो 1 by √3 plus 1 by √3 is going to become 2 by √3. Next one also will be 2 by √3, but जो third one है that is going to become 0. So the equation will be
x minus 1 upon 2 by root 3 is equal to y minus 2 upon 2 by root 3 is equal to z minus 3 by 0. अब इसका क्या मतलब होता है यार, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा. डिनोमिनेटर में कैन यू राइट 0? No, you cannot. So this is not the perfect way to write equation. तो इसकी जगह पर what you generally do is, since z minus 3 upon 0 is written, you can consider it as that z obviously will always be equal to 3. Because you cannot have a non-zero quantity upon a zero quantity. So numerator has to be 0, right? So therefore equation में अब हम root 3 भी हटा सकते हैं, है ना. Direction ratio लिखना है, so you can eliminate root 3. So finally it will look somewhat like x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z, or let's say another thing will be z is equal to 3. So on that particular bisector, z always will be equal to 3. And so therefore the correct option here will become C. ठीक है? So this will be the right answer for equation of angle bisectors. So angle bisectors निकालने के लिए either you go by vector or you go by 3D. Next thing जो लाइन में और आता है, that is when line and point are involved. So जब line and point involve होते हैं तो वहां पर काफी सारी चीजें आती हैं. Distance of a point from a line, foot of perpendicular पूछ सकते हैं, image पूछ सकते हैं. So if they ask you what is the foot of perpendicular from a point to a line, तो इसका I would suggest you don't remember the formula, just remember the approach. Point is given, line is given, ठीक है, और मुझे इसका foot of perpendicular निकालना है. So it's going to look somewhat like this. Now जब हम perpendicular drop करेंगे, let's say that coordinate as my point P. अब point P निकालना है and P obviously is lying on the line, so you can take it as lambda and write the general point P coordinate, जो कुछ ऐसे बन जाएंगे. And then जो condition हमें निकालनी है या लगानी है is AP हमेशा line के perpendicular है. That means AP vector will always be perpendicular to this parallel vector, and if two vectors are perpendicular, you know that their dot has to be 0. अब यहां हम उसी को dr में लिखेंगे. So dr's of AP is just subtraction of coordinates of A and P. तो वो हमारा ऐसा कुछ आएगा when you subtract P and A coordinates. And dr's of line is already A, B and C. So that cos theta value A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 will be 0. है ना? वही यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे. So you will get a condition somewhat like this. अब इस कंडीशन से ऑब्वियसली आगे क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड लैम्डा की वैल्यू आप यहां से निकाल के देख सकते हो, कुछ इस तरीके से निकल के आती है. बट दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अप्रोच ही याद रखनी है. व्हाट यू हैव टू डू, कंसिडर अ पी पॉइंट, general point on this line, find your APDR or vector. Similarly उसका parallel vector के साथ में डॉट यू हैव टू पुट एज 0, या उसी को dr की टर्म्स में लिख के 0 करना है. वहां से कुछ लैम्डा मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड बैक इन दिस टू गेट योर पॉइंट P. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर. समझ में आया कॉन्सेप्ट? और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये सवाल करो जल्दी से, बताओ हमें पॉइंट 1,6,3 का लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है. फिगर कुछ रैंडमली ऐसा बनेगा, लेट्स से. सो अगेन विल कंसिडर पॉइंट P ऑन दिस लाइन एंड वही AP को इस लाइन के परपेंडिकुलर करेंगे. ठीक है, तो AP लिखेंगे जल्दी से, उसका dr लिखना है, लाइन के साथ में डॉट लेना है एंड यू हैव टू मेक इट 0. सो जल्दी से बताओ यार क्या आंसर आएगा. अगर इस पॉइंट पे मुझे पॉइंट कंसिडर, लाइन पे पॉइंट कंसिडर करना है, सो आई टेक इट एज लैम्डा, है ना. तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएंगी. एंड देन आई हैव AP विद मी, सब्ट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स करके आई कैन राइट इट्स dr. सो यहाँ पर AP जब L के परपेंडिकुलर है, तो what you can do is that dr of this is going to become lambda minus 1, this will be 2 lambda minus 5 and third one will be 3 lambda. ये तो हमारा AP का dr है, लाइन का dr is with us which is 1, 2 and 3. दोनों का डॉट हम 0 कर देंगे. And from here when you calculate, it is lambda plus 4 lambda plus 9 lambda, which is 14 lambda, and that is equal to 14. So lambda value will come as 1. And when you substitute over here, you will get your foot of perpendicular, which is 1, 3, 5. ठीक है, ये हमारा foot of perpendicular होगा for this question. Got it? Have you got it, guys? Are you getting it? कैसे foot of perpendicular निकालेंगे? Do not remember the formula, remember the approach. And यहाँ से you can find the image also. किसी भी सवाल में when they ask you about image, you can get the foot of perpendicular and then you can apply the section formula. Because A and A dash का midpoint has to be your point P. ठीक है, तो same ही concept से you can also get the image. Alright? Okay.
Next thing is when you want to find perpendicular distance of a point from line, perpendicular distance निकालना है अगर हमें यहाँ पर, so we have to find this point P, जो अभी हमने foot of perpendicular निकाला था by the same concept, and once you get P, you have to just find this distance AP. This will be the perpendicular distance of a point from a line. Got it? समझ में आया? 3D में this is how you have to solve. All right? Okay. Moving further, next is skew lines. Now, what are skew lines? So generally, जो ऐसी lines intersect नहीं होती है, I don't think whether you can see this or not. This is black only. So when you have two lines which do not intersect and they are not parallel, that means कि वो एक plane में lie नहीं करेंगी. कोई भी ऐसी दो lines आप ले लो जो intersect भी नहीं कर रही हैं और parallel भी नहीं है, तो they are always skew lines. अब उस skew lines में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो कोई भी, वी हैव ऑलरेडी रेड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकर्स अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना? कॉमन जो परपेंडिकुलर होता है उसके अलोंग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा. सो इफ योर फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू पी वेक्टर, सेकंड लाइन इज पैरेलल टू क्यू वेक्टर, तो ये जो कॉमन नॉर्मल होगा इट हैज टू बी पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू. वहीं से निकलेगा दोनों का क्रॉस लेने पर. इसको थोड़ी देर के लिए मैंने n बोल दिया. Now I have one point A on one line, B is on another line. So shortest distance is nothing but projection of this AB on the normal vector. ठीक है? और projection का फॉर्मूला होता है AB dot n divided by magnitude of n. और n क्या था? n था P cross Q. And AB obviously will be B minus A. तो फाइनल फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा. This is my AB and this is my normal. Got it? So it's B minus A dot P cross Q divided by magnitude of P cross Q. Shortest distance पे भी questions पूछते हैं guys in JEE Mains as well as in JEE Advanced. So you do have to remember this formula thoroughly. भूल गए हो तो please write it down in your notes copy. B minus A dot P cross Q divided by magnitude of P cross Q. Clear है? Now अब यहाँ पर अगर suppose इसी को मुझे 3D में लिखना हो तो 3D में equations let's say हम ऐसे कुछ assume कर लेते हैं. This is the dr of one line, that means it represents P vector, and this is the dr of another line, it represents Q. x1, y1, z1 एक point रहेगा, that is A, another is B. ठीक है? तो वही सेम चीज जो अभी हमने लिखा था B minus A dot P cross Q divided by magnitude of P cross Q, कुछ ऐसा बन जाएगा. बट स्टिल आई वुड एडवाइज यू कि अगर 3D में भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, गो टू वेक्टर्स और वहीं पर ही लगा दो फॉर्मूला. कौन इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखेगा, है कि नहीं? सो देयरफॉर ऑलवेज डू रिमेंबर, वही एक फॉर्मूला लगाएंगे हम. इस फॉर्मूले को टोटली भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की. मुझे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, स्पेशली द डिनोमिनेटर पार्ट. सो जनरली वी गो बाय वेक्टर्स व्हेनेवर दे आस्क यू अबाउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस. अब सपोज अगर हमें कोई भी दो लाइंस रैंडमली दे दी एंड यू हैव टू फिगर आउट कि भाई बताओ कि वेदर दे आर स्क्यू और नॉट. सो दैट मीन्स आई हैव टू फिगर आउट वेदर द लाइंस आर कोप्लानर और नॉट. ठीक है? अब अगर कोप्लानर होती है, कोप्लानर का मतलब क्या होता है? बोथ द लाइंस आर लाइंग इन द सेम प्लेन. Okay, so if they are lying in the same plane, that means they will be either intersecting or they will be parallel. दोनों केसेस सही रहेंगे. So if the lines are parallel, वो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन से कि उनका डायरेक्शन रेशियो जो होगा that has to be same. मतलब A1 A2 दोनों बराबर होंगे, B1 B2 बराबर होंगे, C1 C2 बराबर होंगे, या फिर उनका रेशियो बराबर होगा. And if the lines are parallel, obviously they are coplanar. ठीक है? अगर suppose वो कोप्लानर नहीं, पैरेलल नहीं है, तो अगर उनको कोप्लानर होना है तो दैट मीन्स इफ दे आर नॉट पैरेलल दे हैव टू बी एनी हाउ इंटरसेक्टिंग. अब कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू जज वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट? सो वन थिंग इज you find a point on this line L1, you find a point on this line L2. लैम्डा और म्यू दोनों हम निकालेंगे. ठीक है? एंड उसके बाद में हम जनरल x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे. If you are getting a point which is lying on both the lines, that means the lines are intersecting and therefore they will be coplanar. वो एक तरीका है. But suppose if you don't want to do this, you don't want to find कि नहीं भाई हमें point नहीं निकालना है, और कोई तरीका बताओ, तो हम जाएंगे जो हमने अभी सीखा था shortest distance पर between skew lines, which was B minus A dot P cross Q divided by its magnitude.
ठीक है. एंड इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग वी ऑलरेडी नो कि उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट विल बी 0. एंड अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है दैट मीन्स दिस न्यूमरेटर पार्ट दैट इज b माइनस a डॉट p क्रॉस q 0 हो जाएगा. एंड b माइनस a डॉट p क्रॉस q को अब जब हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे सो you'll get a relation like this. This will be b minus a and these are the direction ratios for the lines p and q. Got it? So this is how you will get whether the lines are intersecting or not. Parallel lines हम directly देख सकते हैं. And if the lines are skew, you can find the shortest distance. All right? Okay. Now, अब suppose जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, दो lines के लिए तो मैंने बता दिया how you have to solve it. What happens when you are given 3 lines? So here the question says that if these lines are concurrent, guys, if you're having a problem, with the flow, you can always view the session again and again. यार YouTube पे ये session हमेशा रहेगा, ठीक है? It's sort of a revision, I already told you, so that's why you might have a problem with the pace. But आप इसको दोबारा से देख सकते हो YouTube पे, यही फायदा है इसका, ठीक है? तो अभी बस यहाँ रहो and try to grasp as much as possible. और अगर फिर भी you have any doubt, you can again go on and view this again to get your concepts clear. ठीक है? अमर, प्लीज डू दैट. ऑलराइट, तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सवाल सॉल्व करो यार साथ में, देन ओनली यू विल गेट अ फील कि ओके समझ में आ रहा है. हियर 3 लाइंस आर गिवन एंड दे हैव आस्क्ड that find the condition on h and k, or let's say find the values of h and k if the lines are concurrent. That means all these 3 lines will pass through one single point. Now ये दोनों lines में सब कुछ पता है, I know everything. Alright, सब कुछ पॉइंट पता है, डायरेक्शन कोसाइंस पता, डायरेक्शन रेशियोज पता है. सो व्हाट आई विल डू इज कि पहले आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड लाइन. भाई फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, और अगर पॉइंट मिल गया तो उसको थर्ड लाइन में बस सब्स्टिट्यूट करना है. गॉट इट? What we are doing, we are trying to get a point on L1 and L2 and therefore I am equating it to lambda and mu. Now यहाँ पर कोई पॉइंट लिखेंगे so that will be lambda 2 lambda 3 lambda, and इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा 3 mu plus 1 comma 2 minus mu comma 4 mu plus 3. And क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट निकालना है, I'll just equate these and इनको equate करके I'll find lambda and mu. So if I equate let's say x and y coordinates, so I'm going to get an equation like this. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया simultaneous equation सॉल्व करने के लिए, so I'm going to get 2 lambda is equal to 6 mu plus 2, and from these two equations I'm going to get mu as 0 and lambda as 1. And mu as 0, lambda as 1 जब हम यहाँ रखेंगे for the z coordinate, this is 3 and ये भी 3 आता है. That means boss lines intersect कर रही हैं, and lambda 1 जब हम यहाँ रख रहे हैं तो point which is coming is 1, 2, 3. So we have got the common point and now we'll just substitute in the third line and get the values of h and k. Alright? तो जल्दी से पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 1, 2 and 3 you substituted over here in place of x, y and z and tell me what you're going to get the values as. तो यहाँ पर जब हम L3 में substitute करेंगे so it's going to become a condition like this. This is going to get cancelled, 1 है तो h की value यहाँ से directly you are going to get as 2, and similarly अगर हम k की value निकालेंगे so you are going to get k plus 1 by 3 is equal to 1 by 2, so k value will become half. So the answers will be h is 2 and k is half. D option, that's correct Prakash. Well done. So this will be the answer. Have you got it? How we have solved this out? Alright. And अब आएगा तीसरा जो important part है इसमें, which is plane. And guys, let me remind you, plane is very similar to what I just talked about a few minutes before. Straight lines. काफी सारे formulae for straight lines and planes are very similar to each other. ठीक है, बहुत ही सिमिलर है. तो प्लेन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई फाइंड इन दिस एंटायर 3D. सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन. तो प्लेन क्या होता है कि इफ यू आर ऑन अ सरफेस एंड इफ यू जॉइन 2 पॉइंट्स, let's say these are the 2 points you talk about A and B. So जब भी हम इसको join करते हैं तो वो जो line है that has to lie on that surface always. If you take any 2 points on that surface and you join and get a line, that line has to lie on that surface. That means that surface will be a plane. Otherwise एक और क्या बहुत बढ़िया definition हो सकती है इसकी, that suppose if you join any 2 points on this line and any 2 points on the surface and उसके परपेंडिकुलर हमेशा हमें एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन दी हुई है.
What I'm talking about is that if the line joining any 2 points on the surface is always perpendicular to a fixed straight line, then also ये जो surface होगा, this will be my plane. So any 2 points on the surface when you join, it will be always perpendicular to the normal. तो ये जो हमारा perpendicular line होता है, that is normal to that plane. It will look somewhat like this. Got it? So plane की equation के लिए you need 2 things again. You need a point and you need a normal. ठीक है, ये 2 चीजें चाहिए होती हैं to get equation of plane. Alright? ओके अब इक्वेशन की बात करिए तो अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. व्हेन अ पॉइंट एंड नॉर्मल इज गिवन. ठीक है, तो जब पॉइंट एंड नॉर्मल गिवन रहता है, लेट अस से पॉइंट इज x1, y1, z1 and dr of normal is a, b, c. So if these two are given, if you have to write equation of plane, so what we generally do is, we'll take a general point on this plane. Let's say वो point मैंने P ले लिया. So I know by the definition that AP will always be perpendicular to the normal. And if these two are perpendicular, इनके DRs का product 0 होता है, right? So DRs for AP is going to be what? X minus x1, y minus y1, z minus z1. And similarly, plane ka, normal ka dr I already know, which is ABC. So when I multiply the condition, which is going to be, it will be somewhat like a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1. This will be the equation of plane when one point and dr is given. And what you have to remember over here is that ये जो x, y, z के coefficients हैं, a, b, c over here, these are nothing but dr's of normal. So whenever you have equation of plane in this form, the coefficients of x, y, z directly will be direction ratios of normal. Got it? Alright. Now अब यहाँ पर suppose हमें इसका जनरल इक्वेशन पूछते हैं या जनरल इक्वेशन दिया हुआ है. सो हाउ डू यू फाइंड द जनरल इक्वेशन? सो वेल अभी जो हमने सीखा था कि सपोज देयर इज अ प्लेन एंड इट्स नॉर्मल इज गिवन टू अस. नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लेट्स से a, b एंड c है. सो व्हाट वी हैव जस्ट लर्न वाज इट वाज ax minus x1 plus by minus y1 plus c times of z minus z1 is equal to 0. So from here I will have ax plus by plus cz on one side and the constants I'm taking on the another side, which is ax1 plus by1 plus cz1. And this constant I'm writing as some another value or parameter, which is d. So the general form here will be ax plus by plus cz is equal to d. Alright, this is the general form of plane. So line का general form was ax plus by is equal to c. I told you एक नया parameter z is going to be added. So equation of plane will become this. And do not forget a, b, c are direction ratios of normal. Alright. Okay, so these were the two forms which we learned. Now एक फटाफट से सवाल लेते हैं पहले इसके ऊपर. You have to find equation of plane which is passing through a point and is perpendicular to line joining these 2 points. ठीक है? Don't forget, plane की equation के लिए you need a point and normal. तो अब point हमें दिया हुआ है, normal निकाल लेंगे तो सवाल हो जाएगा. ठीक है? तो अब जल्दी से बताओ क्या आएगा यहाँ पर. Let's say this is the plane, it's passing through this point and the plane is perpendicular to line joining these 2 points. तो ये जो line joining points है, यही क्या बनेगा? Normal, right? तो इसका मतलब if I take the points let's say as a and b, so I can say कि भाई यही मेरा normal है. I know the direction ratio of normal. a और b को subtract करेंगे तो dr मिल जाएगा normal का. I have the point and then I can use the first form which we have just learned. ठीक है? तो first form जो हमने learn किया वो फटाफट से use करो guys and tell me what you are getting the answer as. A, B, C are the dr's of normal. यहाँ पर B and A की coordinates को subtract करेंगे, so you are going to get this. So if I do that, if I have to find dr of normal, so when I subtract, it's going to become somewhat like -1, -5, 6. So I have dr's of normal with me. I have the point, and I hope you remember the formula. It was A times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 is equal to 0. Right? तो फटाफट से substitute करो guys. क्या आया जल्दी से बताओ आंसर B. Okay. Rest of you guys, what you are getting? Which option will be correct?
If I substitute A, B, C values over here, I have the point. It becomes somewhat like this. And when I simplify, it's minus x plus 2 minus 5y minus 15 plus 6z minus 6 is equal to 0. And when you connect the constants and bring terms to right hand side, it's going to become somewhat like x plus 5y minus 6z plus 19 is equal to 0. That means my option will be A over here, not B. A will be the right answer. ठीक है, so plane की equation के लिए point and normal की आवश्यकता होती है. Whatever the condition is given, do not forget normal कैसे निकालेंगे. ठीक है, एक बार normal आ गया, plane आ गया, point आ गया, you can get the equation of plane. Alright? अब और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? सो सम अनदर फॉर्म्स आर आल्सो फेमस. इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म था वैसे ही प्लेन में यू हैव इंटरसेप्ट फॉर्म. सो सपोज इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन एज ax plus by plus cz is equal to d. You already know कि if you want to find x intercept, you will put y and z as 0. So x intercept will become d by a. Similarly, y के लिए x and z will be 0. So y intercept will be d by b and z intercept will become d by c. ठीक है? Okay, so when you have the intercepts, इस equation को हम further transform करके लिख सकते हैं like this. x by d by a plus y by d by b plus z by d by c. And these are nothing but my x, y and z intercepts. So this is very similar to the straight lines also. X by x intercept plus y by y intercept plus z by z intercept is 1. And again x, y, z की coefficients will become drs of normal. So questions already बहुत सारे हम करेंगे अगले सेशन में भी. अभी हम सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे, है ना. सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं अच्छे से एंड कुछ कुछ जहां जहां पर सवाल है वो भी सॉल्व करके आंसर निकालना है. सो आफ्टर इंटरसेप्ट फॉर्म नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन. लाइन का हम पढ़ चुके हैं, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म हम निकालेंगे. सो नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है? नॉर्मल फॉर्म के लिए यू नीड डीसीज of the normal. So if let us consider this as OA, I know that हमारा OA will be the normal. तो हमने OA के along DCs consider करी. That means LMN, the parallel unit vectors. तो DCs की जरूरत पड़ेगी for normal form and equation is going to become LX plus MY plus NZ is equal to P. ठीक है? Yes, escape art, whoever you are, this is enough for J advanced, I would say. The theory part we are covering. Obviously you have to solve questions. वो solve करना भी equally important है. Alright? तो theory यहाँ पर हम दोबारा से revise कर रहे हैं. सवाल obviously keep on practicing. Okay, so this is the normal form of plane. Here P represents distance of origin from this plane. And element जो है वो हमारे DCs हैं normal के. ठीक है? Now अगर suppose मुझे कोई equation of plane दिया और उसको I have to convert into normal form. So basically this will be the general equation of plane, and to convert it into normal form, I'll just divide by magnitude of my dr, root over a square plus b square plus c square, because मुझे DCs चाहिए. So this is going to be a by root over a square plus b square plus c square times x, and similarly, and right hand side पर ये जो constant है ना, this always has to be positive because it is representing distance from origin. So if it is negative, try to make it positive. Just multiply by a minus sign. So this is how you can convert general form to normal form. Got it? Okay. All right. Now, एक फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं. You have been given distance of point, I mean distance of origin from the plane and drs of normal. ये drs हैं, dc you have to find out. So dr अगर दिए हुए हैं तो dc के लिए I told you have to divide by its magnitude. So its magnitude will be root over 9 plus 4 plus 36. That is going to be 7, right? So DCs मिल जाएंगे 3 by 7, 2 by 7, 6 by 7. Equation already हमारे पास है. Just substitute LMN values over here, P value as 10. So the final equation will look somewhat like this. ठीक है? If you want, you can take the LCM. So that is going to become 3x plus 2y plus 6z is equal to 70. This will be the equation of plane जहाँ पर origin से distance is given and dr is given. Alright, normal form we have used. Okay, now, agar suppose you have to find equation of plane which is passing through 3 points.
अभी तक तो हमने एक पॉइंट दिया हुआ था एंड नॉर्मल दिया हुआ था एंड वी लर्न हाउ टू राइट द इक्वेशन. हियर सपोज इफ यू हैव बीन गिवन 3 different points on plane and you have to find its equation and let's say coordinates are also given to us. तो अगर हमें इन तीनों से पास होने वाले एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सो वेक्टर्स में व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट हम यहाँ पर वेक्टर्स निकालते हैं, राइट. वी फाइंड बी वेक्टर, वी फाइंड सी वेक्टर, एक जनरल पॉइंट आर कंसिडर करेंगे यहाँ पर और फिर r माइनस ए ये वाला वेक्टर भी निकालेंगे. a here is the position vector for this point a. so this b vector, this c vector and this r minus a vector, ये तीनों के तीनों co-planar हैं. I hope you remember what is the condition for 3 vectors to be co-planar. Box is 0, right? तो इसका मतलब box of r minus a, b minus b and c, all these will be 0. So this is the equation of plane and इसी को you can convert to 3D. I mean क्योंकि 3D में पूछा है तो you can convert and write in this determinant form. So this will be x minus x1, y minus y1, z minus z1 and then corresponding b vector and c vector. This is what you have to use to get equation of plane which is passing through 3 points. Alright? Alright. अब इसका आंसर बताओ फटाफट से क्या आएगा. 3 points यहाँ पर given है और you can go by vectors, you can go by 3D, but I would advise कि आप 3D से कर लो. फटाफट से किसी एक को इनिशियल पॉइंट मान लो एंड बाकी के लिए यू कैन राइट करस्पॉन्डिंग x2 minus x1 एंड x3 minus x1 वाला पार्ट. सो डिटर्मिनेंट में व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन समवॉट ऐसा कुछ बनेगा. इस इनिशियल पॉइंट को आई एम टेकिंग एज x1, y1 एंड z1. ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आई एम राइटिंग ऑल द वैल्यूज एंड व्हेन यू एक्सपैंड दिस आउट इट बिकम्स 4x minus 3y plus 2z is equal to 3. So when 3 points are given, you can again write equation of plane. बस यही याद रखना है which what you have learned in vectors कि कोई भी 3 vectors को whenever you have to make coplanar, box 0 करो. वहीं से you can convert that into 3D and find the answer. Alright? Further moving, अगर suppose हमारे पास में 4 different points हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लानर होता है. एनी 3 पॉइंट्स आप ले लो 3D में, एक प्लेन हमेशा पास हो सकता है. बट व्हाट इज द कंडीशन है, 4th पॉइंट आल्सो हैज टू लाई ऑन दैट प्लेन. तो अगर हमारे पास 4 कोप्लानर पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो जो हमने वेक्टर्स में सीखा था वही तरीका हम फिर से यूज करेंगे कि इफ 4 पॉइंट्स आर गिवन, हम 3 वेक्टर्स निकाल लेंगे. Initiating let's say from my point A and PQR vectors, since they are coplanar, their box has to be 0. और इसी को फिर हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे. सो व्हेन यू कन्वर्ट इनटू 3D अगेन यू विल गेट अ डिटर्मिनेंट. इट विल बी समवॉट लाइक दिस. इनिशियली ये हमारा P वेक्टर है, सेकंड रो इज Q वेक्टर एंड थर्ड इज R वेक्टर. डायरेक्शन रेशियोज आई एम राइटिंग जस्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ऑलराइट, तो 4 पॉइंट्स को कोप्लानर करने के लिए दिस इज द कंडीशन. सो ये था प्लेन के बारे में. नाउ प्लेन के साथ में वी माइट एसोसिएट समटाइम पॉइंट, वी माइट एसोसिएट समटाइम लाइन. तो अगर हम पॉइंट को एसोसिएट करते हैं तो पॉइंट्स में काफी सारे डिफरेंट तरीके के सवाल हो सकते हैं. जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन. तो अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को P कंसिडर करेंगे, सो वी नो दैट AP हैज टू बी पैरेलल टू द नॉर्मल. और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यू ऑलरेडी नो देयर कोएफिशिएंट्स विल बी इक्वल. नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC है, AP का डायरेक्शन रेशियो इज जस्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, राइट. तो ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे यहां से. when you equate this to lambda, you are obviously going to get P point coordinates. तो P point हमारा आ जाएगा जैसे XP will become x1 plus a lambda. Similarly YP and ZP you can write and उनको you are going to substitute in this plane. क्यों? क्योंकि P point is lying on the plane, right? So when you substitute, you will get a condition like A times of x1 plus a lambda plus B times of y1 plus b lambda plus C times of z1 plus c lambda is equal to D. And from here you will get a value of lambda. उस lambda की value को you can substitute back, let's say in first equation to get your foot of perpendicular. तो इसके लिए जब हम lambda निकालते हैं ना, तो वो ये आता है. And यहाँ से when you substitute it back in the first equation, it will look somewhat like this. और ये चीज सिमिलर है स्ट्रेट लाइंस में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था, राइट. आई एम अगेन टेलिंग यू स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स काफी सिमिलर हैं, बस एक z कंपोनेंट हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ा है. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन राइट एंड यू कैन फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर. एंड सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग इमेज का भी एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा चेंज होता है वहां पे, पर वो निकालने से पहले लेट्स कंसिडर
a question over here. हमने foot of perpendicular पूछा है of point on this plane. हम फटाफट से वही formula apply करेंगे and will substitute x1, y1 and z1 as 1, 0, 2 and a as 2, b as 1, c as 1 in this formula. So when you do that, यहाँ से हमारा foot of perpendicular finally ये निकल के आता है 4/3, 1/6, 13/6. Alright, this will be the foot of perpendicular और just formula apply करना है, nothing else has to be done. x1, y1, z1 जो हमारा point है that is given, a, b, c are also given. So put in this formula and you can get foot of perpendicular. And in the similar fashion, you can also get image. वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? So after this foot of perpendicular, if suppose I have to get image of a point with respect to a plane, plane की equation is given to me, alright? And image मैंने consider कर लिया, let's say it's a dash which is x dash, y dash, z dash. So we are going to go in the same fashion. हम यहाँ पर जानते हैं that this will be the foot of perpendicular which will be midpoint of a and a dash. So I can say that xp here will be x1 plus x dash by 2. So x dash की value will become 2xp minus x1. Similarly y dash and z dash यही आने वाले हैं, ठीक है? Now foot of perpendicular के अभी हमने ये वाली condition use करी थी. I hope you remember. तो इसमें what we are going to use do, हमने वो lambda निकाला था, उसका use हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं suppose x dash minus x1 लिखती हूँ by this first equation, so it's going to become 2xp minus x1 minus x1, है ना? तो हमारा x dash minus x1 twice of xp minus x1 by a आएगा, and that obviously from first equation will be equal to 2 lambda. And lambda की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, so finally this will be the formula for image. तो अपन को डेरिवेशन से बिल्कुल मतलब नहीं है. What you have to remember is foot of perpendicular के लिए यहाँ 1 आता है, image के लिए you get 2 over here. That's it. All right? Okay. Then is distance of point from a plane. तो यहाँ पर suppose your plane is given to us general equation and drs of plane मतलब जो normal के drs हैं which are a, b and c and a point is given जिससे हमें distance निकालना है. तो vectors में we have already learned this formula, right? अगर ये alpha vector इसका position vector है तो it is alpha dot n minus d का whole magnitude divided by normal magnitude. Normal का magnitude will be nothing but root over a square plus b square plus c square. वही होगा. So therefore this will be the formula. फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है. अगेन सिमिलर टू स्ट्रेट लाइंस, वहां पर z कॉम्पोनेंट नहीं होता था. हियर यू आल्सो हैव द z कॉम्पोनेंट. दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है? नेक्स्ट इज लाइन एंड प्लेन. सो लाइन एंड प्लेन में इफ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल सपोज, so this is the angle between line and plane. So line and plane की जगह we find angle between line and normal, which will be obviously its component 90 minus theta. And अगर वो 90 minus theta है, you have dr of line, you have dr of normal. So cos of 90 minus theta basically becomes sin theta. And therefore theta की ये value आती है, sin inverse of this entire thing, a1 plus bb1 plus cc1 divided by their magnitudes. Now suppose अगर यहाँ पर line parallel to plane हो जाती है, that means it will be perpendicular to the normal. So this part will become what? 0. And अगर लाइन पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो गई है प्लेन के, so it would look somewhat like this. And यहाँ पर लाइन एंड नॉर्मल आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, so their ratios will be same. ठीक है? तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की ये दो कंडीशंस हैं. Alright? Then is what is the condition for line to lie in a plane? तो लाइन का अगर एंगल बन रहा है तो एंगल भी निकाल सकते हैं, और अगर लाइन प्लेन में लाई कर रही है, बिकॉज दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ योर लाइन इज लाइंग इन द प्लेन, सो ये कुछ ऐसा बनेगा. हमने प्लेन की इक्वेशन लेट्स से कोई भी जनरल ले लिया, एंड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगी. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब अगर लाइन हमारा प्लेन में लाई कर रही है तो दो कंडीशंस होती हैं. लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट, ये जो पॉइंट होगा लाइन पर, इट हैज टू लाई इन प्लेन. Secondly, line and normal perpendicular हैं, ठीक है? So two conditions will be for line to lie in a plane. First of all, point should lie in the plane, and AA1 plus BB1 plus CC1 has to be 0. Line is always perpendicular to the normal. So we'll apply these two conditions and check whether line is lying in the plane or not. All right? Okay. Now moving further, if suppose you have to find point of intersection of line and plane.
अगर हमें लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो लाइन एंड प्लेन की इक्वेशन विल बी गिवन. सो व्हाट यू विल डू, इस पर हमने लैम्डा से इक्वेट करके एक जनरल पॉइंट माना और उसको प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट. उसको जब हम प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड उसको यू विल सब्स्टिट्यूट इट बैक टू गेट द कॉमन पॉइंट. तो उसको आप इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कॉमन पॉइंट निकाल सकते हो. एक क्वेश्चन देख करके सॉल्व करते हैं फटाफट से, है ना, इस कॉन्सेप्ट पे. यहाँ पर यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन व्हिच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन. ठीक है. अब सवाल ये बोल रहा है कि पॉइंट का लाइन से तो डिस्टेंस निकालना है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है बॉस. प्लेन के पैरेलल जो जाएगा वो डिस्टेंस चाहिए. तो यहाँ पर ये हमारी लाइन की इक्वेशन है. तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस क्यू पॉइंट को निकालने की कोशिश करी. क्यू पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे, विल जस्ट इक्वेट इट टू लैम्डा एंड विल राइट द जनरल पॉइंट. सो दिस इज माय पॉइंट क्यू. नाउ कंडीशन क्या आएगी, दैट दिस पी क्यू विल बी पैरेलल टू द प्लेन. दैट मीन्स it will be perpendicular to the normal, है ना. PQ if it is parallel to the plane, it has to be perpendicular to the normal, right? And perpendicular की condition we already know. A1 plus B1 plus C1 is 0. So हम वही condition लगाएंगे, lambda निकालेंगे and then we can find the distance. Alright? So solve करो guys and बताओ क्या आएगा. Q point हमारे पास में है, हमने यहाँ पर PQ का dr लिखा by just subtraction of coordinates. So PQ का dr is going to become 2 lambda minus 2, 4 lambda minus 5, 3 lambda. And then हम उसको normal के साथ perpendicular करेंगे. Normal का dr is 3, 2 and minus 2. And so therefore, A1 plus B1 plus C1 will make it as 0. And when you solve this, you will get the lambda value as 2. Now lambda 2 आया, so we can substitute it back over here. जब हम 2 substitute करेंगे, so it will become 5, 11, 8, and then obviously we can find distance between these 2 points P and Q using distance formula, और वो निकल के आता है final answer 7. तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पूछ सकते हैं पैरेलल टू द प्लेन, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस पूछ सकते हैं पैरेलल टू द लाइन. Both can be asked. They can ask you distance of point from line parallel to the plane or distance of point from plane parallel to the line. Same concept you have to apply. Alright? Well, next will be your angle between two planes. Now, angle between two planes actually क्या होता है? Well, it is same as angle between two normals. अगर हम normals के बीच में angle निकालें या plane के बीच में angle निकालें, it's one and the same thing. And how can we get angle between normals? I have n1 vector, I have n2 vector as a1, b1, c1 and a2, b2, c2. And the formula, it will go somewhat like cos inverse a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 divided by their magnitudes. So whenever they ask you angle between planes, you can directly get angle between their normals. Put in this formula and get the answer. ठीक है. And agar suppose यहाँ पर they ask you that what is the condition that planes are perpendicular. So if planes are perpendicular, normals are also perpendicular. This cos theta value has to be 0. So this is the condition for perpendicular planes. And similarly, agar planes are parallel, so normals will be parallel. दोनों एक ही direction के along होंगे. So a1 by a2 has to be equal to b1 by b2 has to be equal to c1 by c2. Are you getting it? These are the different conditions for perpendicular planes as well as normal. Parallel planes. Alright? And if suppose they ask you angle bisector. So angle bisector equation, again, दो planes है तो उनके जो bisectors होंगे वो भी planes ही होने वाले हैं, है ना? तो अगर equation of planes is given to us, so ये हमारा bisector का formula होगा. हमने यही चीज straight lines में पढ़ा था. Here just z component is added. And plus and minus लगाएंगे, you will get plus के साथ में एक bisector, minus के साथ में दूसरा bisector. So this is the equation of angle bisectors. Alright? Agar suppose if planes become parallel, so they might ask you distance between planes. And again, when they ask you distance between parallel planes देखने के लिए you already know that x, y, z component should be same. है ना? दोनों का एक ही normal होगा. So if you have two planes like this and let's say किसी एक plane पे we consider a point A, let's say on P2. So P2 पे जब हम पॉइंट लेंगे तो A का डिस्टेंस फ्रॉम P1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड वी ऑलरेडी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला सो इट्स गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस एंड सिंस A इज लाइंग ऑन P2 आई कैन से दैट यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोऑर्डिनेट सो इट्स गोइंग टू बिकम समवॉट लाइक दिस
So इसकी जगह पर we can substitute back d2, giving me the final answer as d2 minus d1 divided by root over a square plus b square plus c square. This is the distance formula between two parallel planes. Got it? Subtraction of coordinates divided by magnitude of normal. Okay. All right. Moving further, coming on to the end of this chapter, we have family of planes. ये again बहुत important चीज है. What do you mean by family of planes? Planes जिनमें कोई common characteristic हो. So here what we are going to read about it, we have to find equation of plane which is passing through, let's say, line of intersection of two non-parallel planes P1 and P2. So these are two planes, this is the common line of intersection. So there will be a third plane which is passing through this. And उसकी equation is similar to family of lines. वहाँ L1 plus lambda L2 होता था, यहाँ पर it's P1 plus lambda P2. Where lambda can take all real values. तो प्लेन की इक्वेशन जो हमें P3 लेट से निकालना है, P1 and P2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. द इक्वेशंस when we consider P1 and P2, let's say these are the two equations, यहाँ पर हम substitute करेंगे. So required plane की equation will become somewhat like this. To get lambda, they'll give a different conditions. इसका किसी point से distance दे सकते हैं. They can give the normal, anything they can give. They'll give some condition. You can put it and get the value of lambda. Lambda आएगा, you can get the equation of plane. So do not forget the statement line of intersection से pass होने वाला plane, मतलब family of planes लगाना है. Alright? Okay. And यहाँ से वो line भी निकालने को पूछते हैं. And वो line की equation को sometimes non-symmetrical form बोला जाता है. Now non-symmetrical form का मतलब क्या होता है कि भाई P1 and P2 की ये जो line of intersection है ना, इसको निकालने के लिए generally कई बार P1 P2 को equate करके लिख देता है. अब देखने से what you think is that it is basically two planes you are equating, right? But it is actually giving you a line. जब आप इनको solve करते हो, you get a line and that is line of intersection. Now line की equation निकालने के लिए what do you do? What do you need basically to get equation of line? Well, you need a point and you need DRs. Now to get DR, what you do? So basically what is going to happen when you have this line, it will be perpendicular to both the normals, right? It will be perpendicular to both the normals. So A1, B1, C1, this will be my one normal, A2, B2, C2 will be my another normal. So if I have to get its DR, I would say that I'll just take cross of N1 and N2, right? So this will be determinant I cap, J cap, K cap. This will be A1, B1, C1 and this is going to be A2, B2, C2. And इनका जब मैं cross product ले रहा हूँ, when I take its determinant, I'll get what? I'll get a vector which is along the line of intersection. Alright, it will be both perpendicular to N1 and N2. So line of intersection के along, if you want parallel vector or DR, you have to take cross of N1 and N2 both. क्योंकि वो दोनों के perpendicular है. Line is perpendicular to both N1 and N2. So यहाँ से you are going to get parallel vector or DR. And what about the point? We need a point also. So what you generally do is for point in these two planes, you can put one of x, y or z as 0. Let's say if suppose A is A1, if I say is non-zero, the x component. So if I want to find a point on yz plane, I'll put my x as 0. So if I put my x as 0 over here as well as over here, y and z में I'll get two different equations. Alright? And on equations को solve करके I'll get my point y1 and z1. So what I have done, to get equation of line, I'll take cross of normals to get dr. And for a point, I'll either put x as 0 or y as 0 or z as 0 in equation of both the planes. After doing that, I'll solve simultaneously, suppose these two equations to get y1 and z1. And once I get that, I'll get my point. So this is my non-symmetrical form of line. And if any question is asked based on this, either they ask you about getting dr or getting equation of line, you have to follow these two steps. Got it? एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से. A/S official, I'm taking a question over here. You can clear your concept again. You have to find equation of line in symmetrical form. This is non-symmetrical form. That means two planes are given to me. I have to get its line of intersection. Okay. So what I'll do, first of all, to get line of intersection, first of all मैंने ये दो planes consider किए. And यहाँ पर I'm trying to get DRs of normal. That means A, B and C. So cross product I have to take for
these two normal vectors. ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा determinant में I am keeping n1 vector and n2 vector, and when you solve it, it's going to become 8i cap plus 12j cap plus 16k cap. So if you want direction ratio, you can just divide this by 4 and you can write the direction ratio as 2, 3, 4. So direction ratios के लिए we have taken cross product of normal vectors. So one thing is accomplished. Second thing, I have to get a point. Now to get a point in these two equations, either you can put x as 0 or y as 0 or z as 0. So I am, let's say, substituting z as 0. Alright. So when I put z as 0 in equation 1 and equation 2, ये part eliminate हो गया. I am getting two equations in x and y. So first equation को I'll divide by 4. So it will be x plus y is equal to 3. Similarly, second equation again I'll divide by 4. So it's going to be 2x plus 3y is equal to 8. And to get the point, I'll just multiply it by 2 and subtract. So I'm going to get minus y is equal to minus 2. That means y is 2. And if y is 2, my x value will be 1. So my point on line is going to become 1, 2, 0. Right? So now I have both the conditions which I need. I have got the direction ratio which is 2, 3, 4 by taking cross of normals. I have got the point by putting z as 0 in equation of planes. I have point, I have direction ratio, so it will be x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. Have you understood what I have done? Again, I am repeating. For direction ratio, I am taking cross of normals, and for point, I am putting either x or y or z as 0. In this question, I have taken z as 0, got the point, and then I am writing equation of line in symmetrical form. This is how you are going to get your line. Understood? So guys, this was the last thing, and please do subscribe to our channel. There are more videos like this which are coming and covering all the topics, important topics for JEE Mains as well as advanced. So next session will be tomorrow, as you all know, and if you still have not subscribed, please do subscribe to our channel, and many new things you'll find. It will be an entire recap, or let's say entire JEE advanced and mains portion will be covered over here. Thank you.